Hello everyone, welcome to the concept and fact of life sciences. Today in this video we are going to discuss about the functions of plasma membrane, and one of the important function is transportation. This is the second lecture on this topic. In our previous video we have already discussed about the passive transportation process, transporters involved in the passive transportation like ion channels, carriers, their structure, types, diffusion, facilitated diffusion, and also about the fluid transporters. So if you want to clear that part, you can check out my previous video. In this video, we will take the second part of membrane transport, that is the active transportation. As the name suggests, it is a active transportation, so it is energetically unfavorable process. Means here you require to invest the energy either in the form of ATP or in the form of light or in the form of some आयन ग्रेडियंट, जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे. सो कैसे भी हो यहाँ पे आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, उसी कंडीशन में ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा. नाउ हियर द मॉलिक्यूल इट विल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन. मतलब कोई भी मॉलिक्यूल अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाएगा. जहां पहले से अधिक सांद्रता है, हायर कंसंट्रेशन है, उसी डायरेक्शन में अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है, देन यू रिक्वायर सम एनर्जी, और इसीलिए these transportation they are called as active transportation. And if we talk about the charged molecule, अगर charged molecules की बात करें, then the movement is against the electrochemical gradient. जैसा कि हमने previous video में बात की थी कि electrical plus concentrational gradient, it is known as the electrochemical gradient. So वहां पे along the electrochemical gradient हो रहा था, यहाँ पे it will be against the electrochemical gradient because it is a active transportation process. Now the process is energetically unfavorable, so it will be non-spontaneous. Means अपने आप नहीं होगा. कब होगा? When you give or when you provide the energy. So these are the non-spontaneous process. If the process is non-spontaneous, the entropy, that is the measurement of disorderness, it will decline. Now these active transportation, they can be divided into two types. One is known as the primary active transport, while the other is known as the secondary active transport. Now in case of the primary active transport, you have to invest the energy in the form of ATP or in the form of light when we talk about the bacterial rhodopsins. While the secondary active transport, they completely depends upon the occurrence of primary active transport. They utilize the energy which is generated, or they utilizes the gradient which is created by the primary active transport to transport the other molecule against their concentrational gradient. Means ये completely primary active transportation पे depend करेगा. ये secondary active transportation तभी होगा जब कहीं पे primary active transportation हुआ है, कुछ कंसंट्रेशनल ग्रेडियंट उसने क्रिएट किया है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में उसी कंसंट्रेशनल ग्रेडियंट को यूटिलाइज किया जाएगा फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सम अदर मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशनल ग्रेडियंट, बिकॉज इट इज ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट. नाउ the process is energetically unfavorable. We can make the process energetically favorable by the investment of energy, and the energy can be invested either in the form of ATP, at some places in the form of light. पहले बात करते हैं लाइट के फॉर्म में आप एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं. द एग्जांपल इज बैक्टीरियल rhodopsins. Now the bacterial rhodopsins, these are the transporters pumps which remain present on the plasma membrane of bacteria. Suppose it is a bacterial cell and you are having the bacterial rhodopsin on their membrane. If we talk about the structure of this transporter, it is a it is having a 7 transmembrane helixes. It is made up of 7 transmembrane helixes like 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, which are alpha helical structures which finally attaches to a retinal. In this way, the construction of or the structure of this bacterial rhodopsin is all about. Now when this bacterial rhodopsin, it receives the light, that is the form of energy. When it receives the light, it will transport the proton against their concentrational gradient. Means पहले से protons H plus ions बाहर ज्यादा है और ये फिर भी बाहर की तरफ ही protons का transportation कर रहा है. Now when these protons they comes
down their concentrational gradient through another type of pump which are known as F-type pumps. These are the F-type pump. इनके बारे में अपन आगे बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ही. When they comes back into the bacterial cell down their concentrational gradient through a specific type of pumps known as F-type pumps, then there is a, suppose this H plus ion, it moves down their concentrational gradient into the bacterial cell. Then there is a generation of energy in the form of ATP, the ADP plus inorganic phosphate. By using this gradient, they will convert into the ATP. So there is a generation of energy in the form of ATP through this F-type ATPases. So this is the structure of a bacterial rhodopsin, where there is a utilization of or the investment of energy in the form of light to transport the molecule against their concentrational gradient. ये जो part है ये अपन ने additionally study किया है कि we can also generate the energy by using this proton gradient by through a pump which is known as F-type ATPase. So next अपन बात करते हैं different type of transporters which are involved in the process of active transportation. तो अभी अपन just बात की थी F-type ATPase. So we are also having V-type ATPases and P-type ATPases, P-type pumps और ATPases. So बात करते हैं एक एक करके इन ट्रांसपोर्टर्स के बारे में. स्टार्ट करते हैं अपन P-type ATPases के साथ में. Now here the investment of energy, it will be in the form of ATP. So जो ऊर्जा दी जाती है इन पंप्स को, that is in the form of ATP. Now these P-type ATPases, they have at least 3 domains. है ना. अब ये डोमेन्स क्या होती है बात करते हैं इसकी. The protein folding, it is of 2 types. There is a local folding and there is a global folding. If the folding of protein, it will takes place in a single domain, then it is known as the global folding. If the different domains, they will fold in different, they will fold differently, then there is a presence of different types of domains. These are domains like domain 1, domain 2 and domain 3. So the domains, they are due to the local folding of protein. So the local folding of protein, it creates domain, and the P-type pumps, they have at least 3 domains. Okay. Now what these domains are? These are ligand binding domain, there are nucleotide binding domain and there is activatory domain. क्या होती है बात कर लेते हैं. Ligand binding domain is the domain where the ligand it will bind, and ligand is generally we can say that it is the molecule जिसको ये पंप ट्रांसपोर्ट करेगा. It is a molecule which is to be transported. It is the ligand. So we are having a ligand binding domain. Next, there is a nucleotide binding domain, and the energy is invested in the form of nucleotide, that is ATP. This ATP, it will get hydrolyzed into the ADP plus inorganic phosphate, and then again there is a attachment of this inorganic phosphate onto the activatory domain. तब जाकर के ये जो P type pump है ये अपनी functioning करेगा. So if we talk about the example of these P type pumps, we are having sodium potassium pump, sodium proton pump in case of plant, we are having calcium pumps, and there is a presence of flippase. Flippase, they are also the types of P types ATPases. मीन्स अपन ने बात की थी जब अपन ने मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरल पार्ट लिया था, वहां पे अपन ने फॉस्फोलिपिड असिमेट्री की बात की थी. कहा था कुछ फॉस्फोलिपिड आउटर फेस पे होते हैं, कुछ इनर फेस पे होते हैं, एंड दिस असिमेट्री इट इज मेंटेन्ड बाय the flippase, which transports the phosphatidyl ethanol amine and phosphatidyl serine towards the inner face of the plasma membrane, and these flippase, they are the P-type pumps, while the other transporter, it was floppase, which belongs to the category of ABC transporters, जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे. So ये कुछ examples हैं, कुछ examples को अपन यहाँ पे देखते हैं. First example we have taken the sodium potassium pump. It is the most
important pump in animals. So it is predominant in animal. It is absent in case of plant and bacteria. इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है थोड़ा आगे अपन इसको बात करेंगे. प्लांट्स और बैक्टीरिया में एब्सेंट है, बट सिमिलर रोल इज प्लेड बाय द सोडियम प्रोटॉन पंप्स इन केस ऑफ प्लांट्स, while proton pumps they plays the similar role in case of bacterial cells. So it is important. So the 25% of our body energy, 1/4 of our body energy, it is invested to maintain this particular pump. शरीर की ऊर्जा का 1/4 भाग तो केवल इस पंप को मेंटेन करने में लग जाता है. समझ सकते हैं कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है. कैसे बात करते हैं इसकी. इट इज ए इलेक्ट्रोजेनिक पंप which creates the electrical gradient across the plasma membrane. Means it is due to this pump the membrane is slight positively charged towards the outer face and it is slight negatively charged toward the inner side. Although this electrical gradient is also contributed by some of the phospholipid. जैसा अपन ने membrane structure में बात किया था कि the inner face of on the inner face of the plasma membrane we are having the phosphatidyl ethanolamine and the phosphatidyl serine, and both of these phospholipid they are negatively charged, which also contribute in the slight negativity towards the inner face of the plasma membrane, while the major contributor which creates this gradient is the sodium potassium pump. कैसे बात कर लेते हैं. This is the structure of a sodium potassium pump. It is having two subunit, alpha and the beta. The alpha subunit it is a transporter unit, while the beta subunit it is a regulatory unit. Now the binding of ATP, the binding of ligands in the form of sodium and the potassium, the binding of inorganic phosphate onto the activated domain, these all domains they remain present on the alpha सबयूनिट. ये तीनों की तीनों, चाहे वो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन हो, चाहे वो लिगैंड बाइंडिंग डोमेन हो, चाहे वो एक्टिवेटेड डोमेन हो, ऑल ऑफ दीज डोमेन्स दे रिमेन प्रेजेंट ऑन द अल्फा सबयूनिट. वो अल्फा सबयूनिट पे ही रहती है. व्हाइल द बीटा इट इज ए रेगुलेटरी सबयूनिट जहां पे कुछ इनहिबिटर्स आके बाइंड होते हैं. सो upon binding of ligand there is a hydrolysis of ATP, there is a binding of inorganic phosphate onto the activated domain. उसके बाद में this transporter it will transport 3 sodium ion outside the cell. At the same time it also transports 2 potassium ions toward the inner side of the cell. So बाहर की तरफ पॉजिटिव आयंस ट्रांसपोर्ट ज्यादा हो रहा है, अंदर की तरफ कम हो रहा है. इट मींस देयर इज ए क्रिएशन ऑफ ए ग्रेडियंट. जो बाहर की तरफ हम देख रहे हैं कि पॉजिटिवनेस ज्यादा है मेम्ब्रेन की और अंदर की तरफ it is less positive or we can say it is negative. Now it also prevents the fusion of cell. अगर इस तरीके का gradient नहीं होगा तो क्या होगा, cells आपस में फ्यूज हो जाएंगे. So this positive due to this positive charge on the outer face there is a repulsion between the टू सेल. और आगे अपन पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन में, कि जब अपने को दो सेल को फ्यूज करना है then we have to disturb the membrane charge by giving some treatment, जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे. So यहाँ इतना से समझना है अपने को कि it is very much important. इसीलिए आप 1/4 बॉडी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हैं. It is important to generate the electrical gradient across the plasma membrane that prevents the cell fusion. And next is the inhibitors. There are some inhibitors which inhibits the functioning of this sodium potassium pump, and these are digitoxin which is obtained from the digitalis purpurea plant, and another one is the ovabane. Both of these inhibitors they belongs to the category of cardiac glycosides, because at the time of heart attacks as a last remedy the injections of these digitoxins can be given to the cardiac muscle directly to revive the heart. ठीक है. अब वो क्या काम करता है, क्या कैसे उसकी फंक्शनिंग होती है, उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे. बस यहां से आपको इतनी सी चीज लेकर चलनी है कि इनहिबिटर्स डिजिटॉक्सिन ओवाबेन दे बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स. अब ये किस तरीके से हार्ट को रिवाइव कर सकते हैं इसके बारे में अपन आगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में बात करेंगे. सो नेक्स्ट अपन ले लेते हैं
the V-type pumps or V-type ATPases. Now these V-type ATPases, they generally made up of two domains. ये दो domains के बने हुए होते हैं और इनकी functioning होती है, ये utilizes the energy in the form of ATP and transports the H plus ion against their concentrational gradient. Since they are the active transporters, so they will transport the H plus ion against their concentrational gradient from low concentration to the high concentration. Now they were firstly discovered onto the membrane of vacuole. Firstly discovered on the vacuolar membrane, इसीलिए इसको कह रहे हैं अपन V type pump, and the vacuolar membrane it is called as the tonoplast. So they were firstly discovered on the tonoplast membrane. The major function of these V type ATPases is to carry out the acidification within the lysosome, endosome and vacuoles. As we all know that the pH क्या होती है? pH is the negative log of H plus ion, है ना? तो अगर आप H plus ions को बढ़ाओगे तो pH कम होगी, एसिडिक होगी. तो जैसे जैसे सिक्वेस्ट्रेशन H plus ion का होगा इन ऑर्गेनल्स के अंदर, तो pH की वैल्यू क्या होगी? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. एज वी ऑल नो दैट द लाइसोसोमल pH इज अराउंड 5, है ना? तो वो 5 pH कौन मेंटेन कर सकता है? दीज V टाइप ATPases, जिन अंदर एंजाइम्स जो लाइसोसोम में काम करते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे. दीज आर द एसिड हाइड्रोलिसिस, क्योंकि वो केवल एसिडिक एनवायरनमेंट में ही काम कर सकते हैं. इनके बारे में बात करेंगे जब अपन सेल ऑर्गेनल्स की बात करेंगे. तो यहां से इतना सा पॉइंट है, these V type ATPases they plays an important role in the acidification of cell organelles. Now if we talk about the structure of this V type ATPases, it is having two domains. One is V0 domain, which is a transmembrane domain, and other is known as the V1 domain. Now this V1 domain, it is further made up of different subunits like subunit A, B, C, D, E, F, G, 7 subunit का ये बना हुआ होता है. While the VO domain, it is made up of 5 subunit, that is A, C, C prime, D and E. Whenever there is a binding of ATP to the V type ATPases, there is a hydrolysis of ATP, and by using the energy, it can transport the H plus ions against their concentrational gradient. Means पहले से H plus ion जहां ज्यादा है उसी डायरेक्शन में ये क्या करेगा? It will transport the H plus ion that creates the acidic environment within the compartments. Next type of pumps, it is the F-type ATPases. Now the function of these F-type ATPases, it is completely opposite to the V-type ATPases. V क्या कर रहे थे? ATP को यूज कर रहे थे, H plus ion को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे against the concentrational gradient, while here it is using the H plus gradient. अब H plus ion का gradient यूटिलाइज करेगा and generates the ATP, और ATP का यहाँ पे जनरेशन होगा. अब आप कहेंगे कि ये ATP तो जनरेट कर रहा है, फिर इसको पंप क्यों कह रहे हैं, है ना? पंप तो जनरली वो होते हैं जहां पे एनर्जी आप इन्वेस्ट करते हैं, बट यहाँ तो एनर्जी बन रही है, तो फिर इसको पंप क्यों कर रहे हैं? Because the energy which remain present in this H plus gradient, it is far higher than the energy which remain present in the ATP. So again you are creating the high grade form of energy into the low grade form of energy. इसलिए अपन कह रहे हैं कि ये क्या है? पंप है. आप ज्यादा अमाउंट की एनर्जी यूज करके कम अमाउंट की एनर्जी यहाँ पे बना रहे हैं. ये जो F type ATPases हैं, they mainly remain present on the mitochondrial inner membrane, thylakoid membrane and the bacterial plasma membrane. जैसा कि अपन ने बात की थी जब अपन ने बैक्टीरियल rhodopsin स्टार्टिंग में पढ़ा था कि the bacteria they have transporter on their plasma membrane which is known as bacterial rhodopsin, which transports the H plus ion against their concentrational gradient. In some bacteria they utilizes the energy in the form of light, while in some bacteria they can utilize the energy in the form of ATP. So by using the energy in the form of ATP, it will transport the H plus ion against their concentrational gradient. So transportation है against the concentrational gradient.
Now when these H plus ions, they comes back into the bacterial cytoplasm through a specific type of transporter which is called as F-type ATPases. When these H plus ion, they comes through these F-type ATPases into the bacterial cytoplasm, then there is a downhill movement, that is the movement that is from higher concentration to the lower concentration of H plus ion, and this downhill movement of H plus ion, it will convert the ADP into the ATP. So there is a generation of ATP. So यहाँ पे क्या किया बेसिकली आपने, जो H plus ion का gradient है उसको यूटिलाइज किया फॉर द जनरेशन ऑफ ATP. So their function is just opposite to the V-type pump. नेक्स्ट अपन बात करें, दे ऑल्सो रिमेन प्रेजेंट ऑन द माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन एंड द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन. जैसे कि अपन जानते हैं, द ओरिजिन ऑफ दीज माइटोकॉन्ड्रिया एंड द थाइलेकॉइड, इट टेक प्लेस थ्रू द एनगल्फमेंट ऑफ सम प्रोकैरियोटिक सेल, that is in the endosymbiotic theory. Endosymbiotic theory के अंदर अपन कंफर्म करेंगे, there is a primitive ancient eukaryotic cell which engulf the alpha proteobacteria which lead to the formation of mitochondria. They also engulf the cyanobacteria which lead to the formation of plastid or the thylakoid we can say. So ये जो आपकी membranes हैं, that is the mitochondrial inner membrane and the thylakoid membrane, they are originated from the prokaryotic cell. इसीलिए जो सिस्टम बैक्टीरियल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे था, वही सिस्टम आपको माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन पे भी देखने को मिलेगा, वो आपको थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे भी देखने को मिलेगा. एज वी ऑल नो दैट ऑन माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, जैसा कि अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन्स के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन ऑपरेट होता है. और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन करता क्या है, इट विल क्रिएट ए प्रोटोन ग्रेडियंट, है ना. It will create a proton gradient between the outer and the inner mitochondrial membrane. और जब these H plus ion they comes back into the mitochondrial matrix through the pumps which are known as F-type ATPases, there is a generation of energy in the form of ATP. Similar type of process is also observed on this particular process. It is known as the oxidative phosphorylation. It is oxidative phosphorylation. A similar type of process also observed on the thylakoid membrane. Here the process is known as photophosphorylation, है ना, जिसको अपन लाइट रिएक्शंस भी कहते हैं. देयर इज ए फोटोफॉस्फोराइलेशन व्हिच अकर्स ऑन द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन. सिमिलरली वहां पे भी लाइट एनर्जी को यूज किया जाता है एंड देयर इज ए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन फोटोसिस्टम टू अनदर फोटोसिस्टम थ्रू व्हिच देयर इज ए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ H plus ion into the thylakoid lumen, and when these H plus ion they comes back into the stroma through the F-type pumps, there is a generation of energy in the form of ATP. So similar process है, वहां यहाँ पे भी ATP का फॉर्मेशन, वहां पे भी ATP का फॉर्मेशन, यहाँ पे भी ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, बट द प्रोसेस इज सिमिलर. क्योंकि अपन कह चुके हैं पहले कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है या प्लास्टिड है, दे आर prokaryotic in origin. So all of these three, they have F-type ATPases on their membrane which generates the energy. So इनके बारे में आगे अपन डिटेल में बात करेंगे जब अपन सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे वो प्लास्टिड हो, उस कंडीशन में अपन अच्छे से देखेंगे कि ये किस तरीके से प्रोसेस होता है. यहाँ से सिर्फ इतना सा समझना है अपने को कि F-type ATPases होते क्या हैं, ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट अपन ले लेते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. जैसा कि पहले ही अपन स्टेटमेंट दे चुके हैं, इट अकर्स ओनली व्हेन the primary active transport has already occurred. Simple. So it is a co-transport, means it depends upon the occurrence of the primary active transport. इसलिए इसको क्या कह रहे हैं अपन, it is a co-transport occurs when the PAT has already occurred. So उसी की एनर्जी को यूज करके ये ट्रांसपोर्टेशन करता है, इसलिए इसको अपन co-transport भी कह सकते हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम कैल्शियम को-ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं, बात करते हैं.
इट इज द सोडियम पोटेशियम पंप, जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं. अल्फा एंड बीटा सब यूनिट. अल्फा इज द transporter domain and subunit, and the beta is the regulatory subunit. Upon utilizing the energy, it will transport 3 sodium outside for 2 potassium inside. Now it will create the gradient of sodium toward the outer face of membrane. Now this sodium gradient, it can be utilized, means when this sodium they comes down their concentrational gradient from their higher concentration to the lower concentration, we can transport the calcium out of the cell. That is from the lower concentration of calcium to the higher concentration of calcium. So it is, we can say, it is again, in case of calcium, it is against the concentrational gradient. So ये क्या है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो गया, that depends upon the occurrence of the primary active transport. अब आप कहेंगे अपन एक कॉन्सेप्ट लिया था, that is these inhibitors, they belongs to the category of cardiac glycosides. इनको cardiac glycosides क्यों कहा? क्योंकि the we can say the application of these digitoxin on ovabin, they are going to inhibit this beta subunit. यानी ये digitoxins जो हैं आपके, they will binds to the beta subunit, और जो सोडियम पोटेशियम पंप है इनको वो इनकी फंक्शनिंग वो बंद कर देगा. तो जैसे ही सोडियम पोटेशियम पंप्स की फंक्शनिंग बंद हुई, द कैल्शियम इट विल रिमेन विद इन द सेल. जो कैल्शियम है वो सेल के अंदर ही रहेगा. विद इन द सेल इट विल इंटरेक्ट विद द ट्रोपोनिन. ट्रोपोनिन मेक्स कन्फर्मेशनल चेंज इन द ट्रोपोमायोसिन, जो आगे अपन पढ़ेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन में. Then the tropomyosin, it will get removed from the myosin binding site on the actin filament. The myosin and actin, they can now interact with each other and there is a muscle contraction. So the calcium, if it remain within the cell, the muscles will remain in the contracted form. तो simple सा फंडा है कि आप डिजिटॉक्सिन का इंजेक्शन देंगे at the time of heart attack to revive the heart. The calcium it remain within, it makes the heart muscle to contract again and there is a possibility कि हार्ट है वो रिवाइव हो जाए. सो दीज आर नोन एज द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स. इस कॉन्सेप्ट को अपन यहाँ पे बना सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सोडियम कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट. ऑल्दो वी कैन ट्रांसपोर्ट दिस कैल्शियम आउट ऑफ द सेल थ्रू द कैल्शियम पंप्स, बट द मेजर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैल्शियम इट इज a secondary active transportation that occurs through the sodium calcium co-transporters. नेक्स्ट अपन एग्जांपल लेते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, दैट इज द बैक्टीरियल लैक्टोज परमीएज. एज वी ऑल नो दैट इन केस ऑफ बैक्टीरिया द ट्रांसक्रिप्शन इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक. It is polycistronic, means many genes they shares a common promoter and the terminator, while in case of eukaryote the transcription it is monocistronic, means each gene it have their own promoter and the terminator sequence. So यहाँ पे काफी सारे genes हैं जो खुद का promoter जो एक ही promoter और terminator share करते हैं. That will lead to the condition which is known as operon, है ना. जिस प्रकार से ओपेरा के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स आर देयर व्हिच हैव देयर फंक्शन, सिमिलरली यहाँ पे भी खूब सारे जो जीन है दे कैन शेयर ए कॉमन प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर, that is called as the operon, and this operon is to utilize the lactose, that's why it is known as lac-operon. Now in lac-operon we are having three genes Z, Y and A. Z it codes for beta glycosidase, which we can say hydrolyzes the lactose to form the glucose. There is a lactose permease which is basically a transporter to transport the lactose from outside the cell to the bacterial cytoplasm. We are also having A that code for the transacetylase, which have no use in this particular type of operon. So in the drawback of this polycistronic transcription कि कुछ genes ऐसे एक्सप्रेस हो जाते हैं जिनकी जरूरत भी नहीं होती है, बट इट इज ए ड्रॉबैक. बट साथ ही आपको जो जीन्स एक्सप्रेशन है एक साथ में देखने को मिल रहा है, तो एक रैपिड प्रोसेस भी क्रिएट करते हैं. तो कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज है.
सो लैक्टोज परमियस, जिनके बारे में अपन आगे बात करेंगे जब इन ऑपेरॉन्स के बारे में अपन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बात करेंगे। तो यहां समझने वाली बात ये है द व्हाई इट कोड्स फॉर ए लैक्टोज परमियस। नाउ दिस लैक्टोज परमियस, इट विल फॉर्म द लैक्टोज परमियस प्रोटीन व्हिच इज बेसिकली ए ट्रांसपोर्टर। नाउ दिस lactose permease, it will be transported onto the bacterial membrane where it will act like a transporter. Now on bacterial plasma membrane we have the H plus pump that utilizes the energy in the form of ATP and transports the H plus ion against their concentrational gradient. Now when these H plus ions, they comes down their concentrational gradient from outside to the inner side of the bacterial cell or the bacterial cytoplasm, then there is a downhill movement of these H plus ion from higher concentration to the lower concentration. इसी energy को use करके there is a transportation of lactose from outside towards the inner side of the bacterial cell. Now ये लैक ऑपेरॉन तभी एक्टिवेटेड होता है जब ग्लूकोज नहीं होता है. Now the bacteria can form the glucose from this lactose. So उस कंडीशन में ही ये ऑपेरॉन स्विच्ड ऑन होता है और देयर इज अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैक्टोज फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू द इनसाइड टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द सेल. So this bacterial lactose permease, it is again the example of secondary active transportation. यहाँ क्या हो रहा है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. प्राइमरी तो H प्लस प्रोटॉन पंप से हुआ ही था, इसके ग्रेडियंट क्रिएट किया और इसी ग्रेडियंट को यूटिलाइज करके यू आर ट्रांसपोर्टिंग द लैक्टोज टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ सेल. So if we talk about the next example, it is very much important, that is the sodium glucose co-transporters. Suppose we are having the intestinal human over here. We are having epithelial cell which absorbs the glucose from the intestine, and then there is a transportation of glucose into the blood. Here we are having a sodium glucose co-transporter which is known as SGLT. Now what is SGLT? It is sodium glucose link transporter, है ना. We are taking the glucose in our diet. There is a transportation of this glucose from lumen to the epithelial cell through a co-transporter which transport this glucose along with the sodium ions. Now the concentration of these sodium ions, it always remain low in the lumen while high in the lumen, and it remain low in the epithelial cell. क्लियर कर लेंगे इसको. सो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन यहां ज्यादा रहती है, यहां कम रहती है. यहां कम क्यों रहती है? बिकॉज देयर इज ए फंक्शनिंग ऑफ sodium potassium pump which transports 3 sodium out for 2 potassium ions. So the sodium which is transported over here, it will be transported into the other side. So ये जो सोडियम है सारा बाहर निकल जाएगा यहाँ से through this sodium potassium pump. So the sodium concentration, it always remain low in the epithelial cell and high in the lumen. So the sodium, it will move from its high concentration to the low concentration, that is the downhill movement of the sodium ions which couples the transportation of glucose from lumen to the epithelial cell. ठीक है, एक हायर से लो कंसंट्रेशन में आ रहा है, एक हायर से लो में आ रहा है, एक लोअर से हाई कंसंट्रेशन में. एपिथेलियल सेल, दे हैव, वी कैन से दे हैव हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, है ना. ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है यहाँ पे, बट this transporter, that is the secondary active transport, it utilize the sodium gradient or the sodium ion to transport the glucose against their concentrational gradient. So now we have glucose within the epithelial cell. Now to transport this glucose from epithelial cells to the blood, we are having the GLUT2 transporters, जिसके बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं. It is a carrier protein which transport the glucose from epithelial cell to the blood by making the conformational change. So glucose को यहाँ से लेगा, यहाँ ट्रांसपोर्ट कर देगा. That movement is always a passive movement, that is from higher concentration of glucose towards a lower concentration of glucose. ठीक है, सिंपली. सो यहाँ पे अपन ये बात करते हैं कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन एपिथेलियल सेल्स तक, इट इज
a secondary active transport, and sodium ion concentration it always remain low in the epithelial cell due to the functioning of sodium potassium pump, and the glucose concentration it remain always high. तो जो ग्लूकोज है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सोडियम डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहा है, और इस ग्लूकोज को अगर ब्लड में डालना है देन वी हैव some carrier proteins that are known as the GLUT transporter. So in this way there is a transportation of glucose from intestinal humor to the blood. So this is all about the active transportation process. In next video we will discuss about the ABC class of transporters, some transportation of cargo molecules also. Thank you very much.